ओके, तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एदर, और, नेदर, नॉर एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कंजक्शन के पार्ट है। कंजक्शन के पार्ट में हमें समझना है कि हम कैसे किसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो सही वैल्यूज हो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर है पहला ऑप्शन, एदर और। कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, कोई सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये है इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। अब इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है हमें? इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि जब भी हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम एदर के बाद हम क्या लेंगे, और का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे हमने किया एदर, या तो ये या तो इंटेलिजेंट है, ठीक है, या तो इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है। दो चीज़ें प्रूव नहीं करते, हम कह रहे हैं कि या तो वो इंटेलिजेंट होगा या वो ऑनेस्ट होगा। लिखा है एदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर यहाँ पर आपने और की जगह नॉट लगा दिया, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, अभी सेंटेंस एप्लीकेबल है नहीं, अभी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें हम नॉट लग चुका है। तो नॉट में क्या है दिक्कत? अभी इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो चुकी है, इज एदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। एकदम हम कह रहे हैं कि अगर वो एकदम इंटेलिजेंट होगा ऑनेस्ट होगा, और हम कह रहे हैं नॉर वो ऑनेस्ट है ही नहीं, समझो। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला कैंसिल हो जा रहा है। तो हमें ये दिक्कत, हमें ये प्रॉब्लम नहीं करनी है, हमें ये करना है सिंपल से। हमें पता है कि एदर के साथ और मैच कर रहा है तो और का इस्तेमाल हमें करना है और नॉर को छोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करना है? इसमें हमें नॉट नहीं लगाना है, सिर्फ और का इस्तेमाल होना है। एदर के बाद हमेशा और का इस्तेमाल हो, क्योंकि वैसे ही मीनिंग बनती है। एदर के साथ और जचता है, मिलता है, नॉट नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेदर एंड नॉर। नेदर और नॉर क्या है? जैसे कि वो सेंटेंस है, यहाँ पर हमने जैसे कि इसकी जगह नेदर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, इस नेदर इंटेलिजेंट, वो होशियार तो है ही नहीं, ठीक है, ना वो ऑनेस्ट है। नेदर मतलब ना ये ना वो, और ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ नहीं हो सकती हैं, और ये तो होगी नहीं होगी। तो नेदर मतलब नॉट के इन सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, और नॉट का इस्तेमाल भी नॉट के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। दोनों चीज़ एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, तो इसमें नेदर ज़्यादा एप्लीकेबल है और ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैच कर रहा है ये सेंटेंस नेदर। ओके, क्लियर हो गया। तो इसमें अगर आप और लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पहले सेंटेंस मिल गया, उसमें हमें नॉर नहीं लगाना था, इसमें हमें और नहीं लगाना है। इसमें हमें क्या, ये देखिए, इसमें और नहीं लगाना है। जैसे कि अगर ये नॉर के बदले अगर हम यहाँ पर और लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचे और किसमें। अब क्या है, हमने देखा ना तो वो इंटेलिजेंट है, नेदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट के मैच कर रहा है, और हम दो को जोड़ने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो को जोड़ नहीं रहा है, कोई मीनिंग नहीं बना रहा है। और क्या मीनिंग बना रहा है इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट से? एनी कुछ भी एप्लीकेबल मीनिंग कुछ नहीं। तो यहाँ पर और का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। यहाँ पर क्या होगा, नॉर का इस्तेमाल होगा क्योंकि नॉर मीनिंग बना रहा है। नेदर मतलब नहीं, नॉर मतलब नहीं, तो वो मीनिंग बना रहा है, तो मीनिंग बन रही है। तो उस सेंस में नॉर का इस्तेमाल जहाँ ज़्यादा एप्लीकेबल है, प्रेफरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर और आ जाए नॉर का यूज़ कर देंगे। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, नेदर और नॉर। कंजक्शन की हम फुल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एदर और, दूसरा है नेदर नॉर, तीसरा है बोथ एंड, देन फोर्थ इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये इसमें क्या क्या होता है, हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। एदर और, एदर और इज सिंपली द थिंग इन विच वी यूज, we give example for it.
is either intelligent or honest. Okay, so either is used in the sense of either this or that. Okay, so either he is either intelligent or honest. Either he was intelligent or honest. So we talk in that sense. Okay, now the thing is that what we do not use in it is not. If we are using the either or, if any sentence there is either and in next where there, if we use not, then its meaning is completely changed, because you are saying either or intelligent nor honest means you are one time you are saying that he was intelligent and honest, and one time you are saying that he was not intelligent or honest. So nor is cancelling the either, and either is cancelling the not. So they can't be came into same category or section. Understand? Now one thing is clear. So whenever either is being used, it is being used with the or, not with nor. Understand? Okay. Now we come to the next, neither and nor. What is neither and nor? Neither and nor is simple. Neither means neither is a sentence or a simplification of not. Not and neither is not so different. They are a same category or a same family tree. Okay. So neither is indicating a nor in both in broader sense. Okay. And nor is also a not, because nor convincing a same meaning. Okay. So when we are saying that we are using neither, is neither intelligent nor honest. So but here what we are indicating? We are indicating that he was not intelligent and nor honest. Both mean, and nor is also indicating the same thing, this neither. But if we use in place of nor or, then what is the meaning? He is neither intelligent or honest. Means or means a conjunction of joining two letters that indicating that one is this and other one is this. But using or, things change slightly different. So the thing is that with neither, okay, if you are using the or, so it misplaced sentence is misplaced meaning and everything is being changed. But if you are using nor, neither with nor, then it makes sense and it is being slightly and so much right. Okay, so whenever we go for neither, we use the nor sentence, not the or one. Clear? Now we come to the both and. Okay, so we take example of it. This one first. Second one is he is not only foolish but also mad. Okay, sorry for the miswriting. Okay, so but he want to convey that he is not only foolish, वो foolish ही नहीं है, but also mad, but also, लेकिन और इतना ही नहीं, लेकिन किंतु, ठीक है. तो यहाँ पर मैड भी हम एक वर्ड सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं जिसमें, तो ठीक है. अब ये सॉरी ये इसके लिए लिखा मैंने फोर्थ वाले के लिए, हम थर्ड वाले को बाद में समझाएंगे. तो वो क्या कन्वे कर रहा है? ये कन्वे कर रहा है कि ही इज़ नॉट ओनली फुलिश, ओके, बट ऑल्सो, लेकिन वो, ठीक है. अब इन प्लेस ऑफ बट ऑल्सो यू सेड वी आर नॉट यूजिंग द बट ऑल्सो, ओके, यू आर सेइंग we use also. So what it makes sense, it is not only, it is there also mad. He is not, okay, he is not only foolish, also mad. This that is making any sense? No, it's not making any sense, because also is nothing in itself. Because also is like an indication that also, okay, mad also. But if you are not, because like we are using the means in sentence we are saying that he was foolish, it is clarified, he is foolish. But if you are using but, then we are indicating that anything more, not only foolish but also mad also. So we are using the but. If you are using also, so it is a misplaced sentence or it slightly not making any meaning. So also is incomplete, we are using but also, then it will be likely to be complete.
Okay, second one is figured out. Then we talk about third one. Okay. Is like blue is both tall and handsome. Okay, so what they are using? They are using both. Okay. Now, and why we are using and? Because both means two words came. Okay, two words came. We need a conjunction that join to one. If you are using here but, okay, now here but. So what it means? It means that he was not tall, but he was handsome. It's incomplete because you are using both and you are saying that but. That does it make any sense? No, not make any sense. So we use with it and, because it work with both, because both and is similar and they together make any sense. Otherwise it is not make any sense. Okay, so we came to the and. For example, we use as well as Bablu is both tall as well as handsome. Does it make any sense? No, because we are simply indicating its characteristic, Bablu characteristic, and using both we indicate that two things is necessary. Okay, so both is what it's saying, that two things are there, both indicating that. And if I was using as well as, then it is not making any sense, or it is not convincing the both one. Both conjunction is incomplete. Okay, so if you are using and, so it meaning is being completed. Okay, so because of that we using and, not as well as or but. Okay, so we are cover some important rules of conjunction. Now after all we cover left one also. Now we come with four new words that are being not, either, either or, neither nor, all through. Okay, so now we're talking about what we are using with afterword of not either. Not either is what? Not either is a conjunction. They all are conjunction, and they are using in different ways in different places. It's likely to be depend on subject or the sentence, what the sentence want to convey. We use it or not. Okay, so if in any sentence, if they are using not or either. Okay, so if, for example, she is not either tall or beautiful. Okay, so she's not either tall or beautiful. Either we know, we use forward, we are using for joining to one. It is used for joining, it will say that either this and that. Okay, so if not is used, not is means in what sense? No, and after either means joining to one. Now we joining tall and beautiful, and we see on our previous example that with either we always use or. So here also we using the or. I also write or, not now. We not use not. If you use not, what happen? You know, if you use not, then its meaning is completely changed, and it doesn't make any sense. Okay, so we are not using not, we are using or. Now second one, either or. Okay, either or. So either get a watch, get a watch or a mobile.
Now either or means what? Either means what? That if any sentence use either, okay, you're using either, and he either get a watch or a mobile. Okay, now afterward what we gonna use? We using the or a pen, a mobile. This way we continue the sentence. We are not using the nor. Okay, if you are using the nor, then its meaning is completely changed, because already we know that either, if there is or, if there is neither there is nor. Okay, you can't intermix them. If you intermix them, everything is being changed. So with either we are using or, with neither we are using nor. Same here, neither nor, we are using neither and nor. And afterward, if again we have to use someone, so we are using nor, not the or. Same meaning. And now with all through and through. Okay, so with all through and through, we are using the yet, not but. By using yet, let's take an example. If you come here, sorry, it is wrong. It is like he is. I use although. Although he is poor, yet he is honest. Okay, so we are using although he is poor. Okay, we are sensing that he is poor, yet he is honest. Then also he is honest. Yet means what? It is being using as a sense that yes, he was saying yes, yet he is honest. Honest means then also is true. But if you are using with yet, but, okay, now using yet as a but, although he is poor, he is poor, but he is honest. It's completely changed. But means that it is neglecting the first one. Okay, there is not a sense in first and second one. Means a completely change. But so we are not use the but. We are used yet, because yet means a conclusion type of word, that convincing that yet he was honest. Okay, you have to act that he is honest. So we are complete the 8 sentences, 8 conjunctions, their rules. Okay, so we are in the next video. अब हम पढ़ने वाले हैं जो 4 बाकी और कंजक्शन हैं, बाकी जो और रूल्स हैं. तो अब आता है नेक्स्ट रूल हमारा इफ और देन का. ठीक है, इफ और देन कैसे इस्तेमाल होता है? तो कोई सेंटेंस है तो उसमें इफ और देन का क्या यूज़ है? तो अगर आप देखें तो इफ़ यू आर कम हियर, अगर आप यहाँ आते हो, देन आई विल टीच यू, तब मैं आपको पढ़ाऊँगा. अगर आप आते हो तब मैं आपको पढ़ाऊँगा. सो इफ इस कंडीशंस ऑन देन, इफ और देन आपको रिलेटेड थिंग्स हैं, या कह सकते हैं कि को डिपेंडेंट थिंग्स हैं. जो इफ डिपेंड करता है देन पे और देन डिपेंड करता है इफ पे. ठीक है, सो वी आर यूजिंग इफ और देन. इफ और देन यूज फॉर वर्ड इफ dependent on then and then dependent on if. How this possible? So we take example. If you come here, अगर आप यहाँ आते हो, then I will teach you, तब मैं आपको पढ़ाऊँगा. तो ये सेंटेंस if डिपेंडेंट है then पे और then डिपेंडेंट है if पे. तो इससे ये सेंटेंस बना हुआ है. अब वो क्या कह रहे हैं, राइटर अपन ये कह रहे हैं कि if और then का इस्तेमाल नहीं करना है. ओके, बिकॉज ओके, तो अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि देन ये और देन में THEN एंड THEN में डिफरेंस क्या है. तो जो देन होता है और जो देन होता है, ये और देन होता है, AN वाला और EN वाला. जो EN वाला देन होता है वो सिंपली यूज होता है टाइम के लिए, एंड ये AN वाला इंडिकेट होता है कंपेरिजन के लिए. सो here we indicate about you come time, we are talking about time. So when there is thing about talk about time, so what we use THEN. And if there are things about comparison like greater than, less than, okay, so we use AN word.
Okay, or if there is time related things like you come until there, you come here, you go there, so we use THEN while then. Okay, the next example is, तो इसमें क्लियर हो गया कि हम इफ के साथ जहाँ इफ होगा वहाँ इफ का इस्तेमाल तो होगा लेकिन देन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम बात कर रहे हैं टाइम की, इफ टाइम इज देयर देन का इस्तेमाल, डेट का इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ देन का इस्तेमाल होगा। ये चीज़ कंजक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ और देन भी इज अ टाइप ऑफ कंजक्शन। देन वी कम अप टू हार्डली एंड व्हेन। हार्डली एंड व्हेन इज व्हाट हार्डली एंड व्हेन बिफोर। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल में लिख लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल है हार्डली यू रीच द स्कूल। हम मुश्किल से स्कूल पहुँचे थे व्हेन इट बिगन टू रेन। सो वी यूज हार्डली इन व्हेन बिफोर, नॉट देन, दैट एंड दैट, बिकॉज इट लाइकली दैट हार्डली we reach the school when we did. It's school-related things, and we not use not, then, and that. It's hardly related with when and before, not with then, that, or then. Because hardly is indicating what? Hardly is indicating simply the things like you use hardly, and then before you get there, all about that. Okay. Then we talk about no sooner. Then is used for what? Then we use for a time comparison. So with no sooner we using the comparison thing. So because of that we was using that, not using the when, then, and but, because you know that then is usually in a time, and when is somewhere else, and but and that is also not being used. Example is that you reach no sooner then time is given to you. So it is what? Comparison with no sooner. Now as and as is affirmative and negative thing. As you go there, as we reach there, a correlated thing but a correlation in them. So we use on negative also and affirmative also. Both are interconnected. Okay. Now we study 4 more rules which have been there. So first we study so as, then as so, then so that, then whether or. So as also we use as इतना जितना, इतना है जितना आपने दिया था, in that sense. Okay. Now as so जैसा वैसा, जैसा छोड़ गए थे वैसा ही है. So that इतना की. Okay. इतना आपने दिया था कि गुजारा हो जाए, इन दैट सेंस, और इट इज़ नेगेटिव एंड अफर्मेटिव ऑल्सो. तो जो सो और दैट है, इट इज़ बीइंग नेगेटिव एंड अफर्मेटिव ऑल्सो. अफर्मेटिव मीन्स यू ऑल नो, इफ यू डोंट नो चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो. एंड सो एज इट्स बी यूज इन नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव फॉर्म. ओके. नाउ वेदर एंड और, की और या. ठीक है, की या मीन्स आप वहाँ जाओ कि ताकि कुछ पता लगा सको, या छोड़ो. In any sense you make any word which is related to that. Okay, so now example is there. First we will talk about so as. Up now there is not think that why you use as, why you not use as so, because we are using same that, like so as so, so that, so. Reverse is also available in that, whether or it has been there. Okay. Now Ram is not dull as teacher expected. Okay, but use Ram is not so dull as teacher expected. Okay, so but so and as is used like conjunction. It's conjunction dull to the later part of the word. Okay, so it's a part of conjunction which I am using in different manner. Okay, now we come to the as and so. As he reached Shimla, so he booked there. We booked room there. So it is also like a conjunction, but as is always mostly we see that as is using in the starting of sentence. So he booked the room there. So it's like a conjunction
which are indicated जैसा वैसा जैसा वैसा. As he reached शिमला, जैसे वो पहुंचा शिमला वैसे ही उसने बुक किया रूम. दे तो जैसे वैसे in that sense. Okay, now so or that. It's both इतना की. It's affirmative also and negative also. So he is so weak that he cannot walk. He is so weak that. And we already discussed that is being used with the comparison. So what he use? Weak, cannot walk. So we compare that he is weak, then he cannot walk. So it's also applicable in its negative sense and sentence, because a negative meaning is being identified from this sentence. Okay, so this is also clear. So why you are using so with that. Now we come with the fourth one, which is what? Whether and or. Ki and ya. Okay, now let's see the example. What is there? We don't know whether he pass or fail. Whether means ki, in sense of ki, कि वो पास होगा या, और इज या फेल, और इज व्हाट या. So it in that sense we are completing the sentence. We don't know whether he will pass or fail. So these are things which are being used together, and let's make a sentence. And these are the rules that if you have followed these, then this likely that you don't, if you remember them, not all you have to learn all, but you know that if whether you are using that or not whether that, if you are using whether and that they are not matching and doesn't make any sense. So with whether